Good evening all, you're watching the news now and I am Bindya with the news at 5. Let's have a look at the headlines first. First day of winter session, Lok Sabha passes farm laws repeal bill. Parmandal Uttarvaini taken under spiritual heritage promotion campaign, LG assures of pilgrimage tourism development. And Altaf Bukhari hits back at PDP, says party runs on the ideology of turning valley into graveyard. And now the news in detail. On the very first day of the winter session of the Parliament, the Lok Sabha today passed the Farm Law Repeal Bill 2021. The bill was passed by Lok Sabha Speaker Om Birla amid ruckus by the opposition parties. Earlier the day, Prime Minister Narendra Modi had said that his government is ready to answer all questions and said that the benchmark should be how the House functions and not how it was disrupted. The Farm Laws Repeal Bill 2021 was passed by the Lok Sabha amid a ruckus by the opposition MPs. The Supreme Court today expressed a serious concern over alarming air pollution in the Delhi and the NCR and called for strict compliance of the measures already announced by the centre and the state authorities. The top court, while flagging its concern over rising air pollution levels in the Delhi NCR, also noted that there is another big problem of COVID-19 alongside the pollution menace. Supreme Court further said that it will ask the centre whether continuing construction work at the Central Vista project is adding to dust pollution and directed Solicitor General Tushar Mehta to explain what steps were taken to curb air pollution caused by the project in Delhi. The Lieutenant Governor Jammu Kashmir Manoj Sinha today laid the foundation stone of Yatri Niwas and Disaster Management Centre on Nagrota Sidra National Highway. The Yatri Niwas by Sri Amarnath Shrine Board is being built for the accommodation and proper stay for the pilgrimage tourists coming to Jammu for Amarnath Yatra in particular. While expressing happiness over the integration of Parmandal and Uttarvaini into the spiritual heritage promotion campaign for its development as pilgrimage places in Jammu, he said that these religious places of UT should be developed under a proper planning strategy. He also highlighted the pilgrimage development projects to be taken up in the future under developmental projects of JKUT. जम्मू कश्मीर प्रशासन इस बात का ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है कि देश भर के जो श्रद्धालु आते हैं श्री अमरनाथ की यात्रा में कोई बात लेकिन इन्हीं कारणों से मैं यहाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का अपना कार्यालय था, मैं यात्रियों की सुविधा के लिए कोई स्थान था, तो ये निर्णय हुआ कि हाँ एक ज़मीन लेकर के इसे बनाया जाए और इसका शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूँ कि 2 महीने में जो दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसकी डिटेलिंग कर रहा आ जाएगा, काम शुरू कराएंगे। रामबन में काम काफ़ी पहले से चल रहा है। इस बार यात्रा जब होगी तो वहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और ये कोशिश करेंगे हम कि 1.5 साल में बन जाए। वैसे ही श्रीनगर में भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक कार्यालय और यात्रियों की सुविधा के लिए एक आवास का इंतजाम किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के सभी इंतजाम उसमें रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे देश में श्रद्धालुओं के बीच वातावरण बनेगा। नहीं, अब यात्रा ये कठिन नहीं, यात्रा के मार्ग पर भी पब्लिक यूटिलिटीज का निर्माण काफी कराया गया है और आगे और कराया जाएगा। Hitting back at PTP in Jammu and Kashmir, the Apni Party President Altaf Bukhari said that PDP is playing politics on the basis of emotions and its ideology of leading the youngsters to graveyard needs to be vanquished and youth needs to be freed from such parties. Calling LK Advani as the first leader of the ruling party, he said that the party remains his entity. While denying commenting on Mehbooba Mufti's recent statement, he said that there must be an important reason better known to her for what she speaks and deliberates upon. नौजवानों को कब्रिस्तान का ही रास्ता दिखाते हैं, उसके बिना मैंने और कहीं पीडीपी को नहीं देखा। और अगर आप उस जज्बाती सियासत को सियासत कहते हैं, अल्लाह हमें उससे नजात दे जो हमारे नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाए। पार्टी के बारे में कहते मैं ज़रूर मानने को तैयार होता है।
Ranbir Canal is a boon to people living in Jammu, especially the farmers, as it provides irrigation facility of lakhs of hectares of agricultural land of Jammu province. Emerging from the Chenab river in Akhnoor, this 60-kilometer long canal extends from Akhnoor to Bhagwati Nagar, Talab Tilo, Gajansu, Trikuta Nagar, Satwari and other interior areas of the city, extending up to Anand Nagar to end at the Araspura border. And while passing through the streets, the serenity of canals turned into muck and silt combined with sewage. The canal has turned into a dumping ground for solid waste, standing testimony to the official apathy and rampant pollution. Though strict instructions have been passed for its regular cleaning, nothing seems to be done on ground. ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੇ ਮਤਲਬ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣ ਤੇ ਡਸਟ ਗੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੂਫੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਤੇ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾ The district police Samba arrested 2 persons for illegally carrying 1 kilogram of gold ornaments. Both were caught in Samba while search patrol, and 180 grams of gold ornaments which they were about to give it to the traders in the Jain market of Jammu were recovered. Coming from Punjab to Jammu, they had fake bills. Later, the team of State Tax Department seized a jewellery worth of rupees 3,23,700 rupees. ये कहाँ की पार्टी थी कहाँ? ये बेसिकली जलंधर की पार्टी है पंजाब से और इसको जैन बाजार में डिलीवर करना था इन्होंने। कौन सी गाड़ी थी जिसमें से रिकवरी हुई है? ये होंडा सिटी कार थी जिसको पुलिस ने इंटरसेप्ट किया है। इनको कोई इन्फॉर्मेशन थी इस गाड़ी की PB08CZ7997। तो इस पूरे गोल्ड का जो अमाउंट टोटल अमाउंट कितना बताया गया? टोटल अमाउंट इस पूरे गोल्ड का है 55,56,826 रुपये। तो टैक्स जो चोरी किया गया वो कितने? टैक्स जो चोरी किया गया है वो है ये 1,60,000 के करीब था टैक्स जो एक्चुअल जो इन्होंने पे करना था। अब पेनल्टी रियलाइज करने के बाद ये बनेगा 3,23,700। उसके बाद ये रिलीज किया जाए? उसके बाद ये रिलीज किया जाएगा। इसमें टैक्स एंड पेनल्टी दोनों। In order to refresh the memories and live the nostalgia and share the experiences of familiar faces of AAGS Budkot, and also to motivate the young achievers of Rajwar, an annual alumni meet cum Young Achievers Award was organized at Ashutosh Army Goodwill School, Budkot, Handwara. The meet started with alumni interaction and speeches, followed by cultural programs, felicitation of the young achievers of the Rajwar. They also enlightened the students about the modern infrastructure facilities available presently at AAGS Budkot and make full utilization for a better career. Alma Mater were thankful to the AAGS and administrative staff for providing them with a well-founded platform and guidance for their present success. स्कूल्स भी बंद पड़े थे बट थोड़ा सा स्कूल खुलने लगे एंड वी गिव द प्रायोरिटी टू जस्ट कॉल अप द एलुमनाई जो हमारे पास इनसाइड वैली अवेलेबल थे उनको हमने बुलाने की कोशिश करी। आई कैन नॉट जस्ट नीदर आई डिफरेंशिएट नॉर आई कंपेयर द स्कूल्स बट व्हाट आई कैन से इज दिस इज एन आर्मी गुडविल स्कूल। वन थिंग द इकोनॉमिकली बैकग्राउंड एरियाज से जो बच्चे आते हैं दे आर ओवर हियर एंड वी आर पुटिंग आवर हाई एफर्ट्स टू जस्ट प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। नो डाउट सब स्कूल तो अच्छा पढ़ाते हैं बट एट द सेम टाइम वी आर एज वेल पुटिंग आवर untiring efforts to make the society an educated society and responsible. A huge crowd witnessed the 9th annual historical traditional wrestling tournament in Barwal village of Kathua. Wrestlers from different parts of the country participated in the grand dangal organized by Dangal Committee Barwal in presence of SSP Kathua Ramesh Chandra Kotwal. While appreciating the participants, SSP Kotwal said that such events are a welcome step to keep youngsters away from the negative activities and encourage the youth towards fitness and traditional gaming. तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो दंगल कमेटी बरवाल है बहुत ही मेहनत मुशक्क़त करने के बाद जिस तरह अंजाम चढ़ते हैं ये इतने बड़े दंगल जिसमें कि विभिन्न प्रदेशों से
बड़े बड़े पहलवान आके अपना दमखम दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो आखिरी का जो बड़ी माल्ली जो थी, जिसको बड़ा माल्ली युद्ध कहा जाता है, वो एकदम बराबरी पे छूटा है। कोई भी पहलवान उसमें डिफीट नहीं हुआ है, हारा नहीं है, ना कोई जीता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह के मल्ल युद्ध, इस तरह के जो अखाड़े, इस तरह के कंपटीशंस आज की डेट की बैकबोन बनने चाहिए, ताकि हमारा समाज एक सही दिशा में जाए। The Jammu and Kashmir police arrested a non-local along with a pistol and a magazine in Bijbehara area of South Kashmir's Anantnag district. As per the officials, the police apprehended a person identifying him as Parvez Salmani, son of Shamim Salmani, a resident of Faridpur Man, Bijnor, at present residing in Gorewan, Bijbehara. One pistol along with a magazine was recovered from his possession at saloon shop located at Gorvan, Bijbehara. An investigation in this regard has been initiated. Major fire erupted at Darish Kadal, Safa Kadal, Srinagar in a house. Property worth lakhs damaged due to that. This as the area has been very congested. Fire services Srinagar station reached on the spot to control the fire with the help of the locals and save the spread to the other houses. People inside the houses were rescued by the fire services. Moving on to the world of entertainment, Bollywood actor Shahbaz Khan is in Jammu these days for the shooting of his upcoming film Gang War, wherein he has worked with the local actors from J&K. While appreciating the acting talent of Jammu and Kashmir, he said that the UT needs a lot of development with regard to cinema. He also added that the industry should look forward to hero worshipping like in the South cinema. आते रहे हैं लोग और आते रहेंगे। बड़ी अच्छी फिल्में बनी हैं, जैसे विशाल भारद्वाज ने बनाई थी हैदर, और जो भी फिल्में कश्मीर में बनाई हैं, बड़ी अच्छी फिल्में बनी। Sir, have you seen a difference between in J&K because I see a lot of other changes in metro cities like Mumbai, Kolkata, Delhi, but these cities, this state is still a virgin state. There's a lot more to develop, a lot more to explore, which is very good. I'm not saying it is. Anand L. Rai's Atrangi Re first song Chaka Chak is finally out on YouTube and is already winning the hearts of the fans. Sung by Shreya Ghoshal, it features the beautiful Sara Khan in a red-green sari dancing to the catchy beats of the song. In a short video of the song, Sara appeared to be dancing on Dhanush's engagement. While Sara looked elated at the ceremony, Dhanush's character had donned a more serious look. And from the world of sports, champions Spain were knocked out of the Davis Cup as favourites. Russian Tennis Federation booked their spot in the quarter-finals with a thrilling victory in Madrid. And that's all in this news bulletin. For latest update and more news, stay tuned with the News Now web and keep reading the News Now daily and e-print paper. Jai Hind.